everyone. So a small delay here. We're just checking in that we are being live on every channel. So please bear with me for some time before we start. And we're going to start very soon. And in the meantime, whoever is here, I would like to welcome you all. Thank you for joining me. It's I've been coming on live. I have done many lives, but since long time there was like a big break. Coming back. So getting used to the technology again. So please allow me some time to have a check. Okay, great. So it's 11:03. I think so we need to start. And once again, namaskaram and welcome to all of you to this amazing series of unleashing your sacred feminine within you. This is some topic which is very close to my heart and which I have been practicing since many, many years. And I've discovered how important it is. So today I'm going to dive deep with you, to this transformative journey of unleashing your sacred feminine. Here we're going to explore the profound significance of embracing your divine feminine energy and how it can help you in your growth and development. कैसे आप अपनी शक्ति के संग जुड़ सकते हैं और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप उसकी तेज में अपने जीवन में अग्रसर कर सकते हैं, ये कुछ जानने की इच्छाएं होंगी इस टॉक में। और हम धीरे धीरे एक एक करके कदम बढ़ाएंगे और समझेंगे कि कैसे, और समझेंगे भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जिसके थ्रू मैं गुजरी हूँ। I would share those with you and how I got to the point where I was compelled to go into it and discover that amazing power within you. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है जब हम इसकी बात करनी शुरू करते हैं, सेक्रेट फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन, कि इसकी जरूरत क्या है? Why do we need it? ना ठीक तो चल रहा है सब कुछ. Why do we need this sacred feminine energy? In today's time, I would say, when there is so much of hustle, so much of competition, so much, it's a fast-paced life, everybody's running here and there, we tend to forget, we tend to ignore our powers within. Especially for the women folk, when I say, because there's so many things which falls on our heads. There's so many avenues to walk. At the same time, we tend to ignore ourselves. हम अपने आप को इग्नोर करते हैं, हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम कहते हैं ठीक है, ये मेरे वाला जो काम है ना, इसको मैं देख लूंगी, पहले ये इम्पोर्टेंट है, लेट मी जस्ट गो थ्रू। ऐसे करते 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 वी टेंड टू इग्नोर आवर पावर्स, एंड व्हेन वी स्टार्ट इग्नोरिंग देम, द टाइम कम्स वी टोटली फॉरगेट देम. And this powerful energy of ours, this powerful Shakti which resides within, is related to nurturing. It is related to our creativity. It is related to our intuitive powers. And these three components of this main triangle plays a very important in bringing out the happiness and joy in your life. The contentment जिसको सब ढूंढ रहे हैं, वो satisfaction जिसको सब ढूंढ रहे हैं, वो peace of mind जिसको सब ढूंढ रहे हैं. हम अपनी शक्ति को छोड़ के दूसरी शक्तियों को पाने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरे जैसा होने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम अपने आप को खोते जा रहे हैं. तो ये जो 10 दिन की ये टॉक है, जिसमें मैं सिर्फ आपके 20 मिनट मांगूंगी, ज्यादा नहीं मांगूंगी, 15 आप, और इसको किसी भी समय सुन सकते हैं. ये रिकॉर्डेड वर्जन्स होंगे, सब चैनल्स पे टेलीकास्ट हो रहे हैं. आप कभी भी ड्राइव करते हुए, मूव करते हुए, यू कैन प्ले देम एंड लिसन टू इट, एंड दिस विल रिलेट with you in a very simple language, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के संग रिलेट करेगा. हम उन्हीं के दौरान ऐसे बात करेंगे, और वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ highly something very spiritual, we're not talking of highly something very intellectual. It is something basic, and I'm sure you all will be able to relate with it. आपको कहीं भी प्रश्न आता है, कुछ भी आता है, you're more than welcome to write your questions to me, to send me a message. I can assure you that your questions will be answered within 24 hours. So now coming to this point that कितना सुंदर होगा हम जब अपनी शक्ति से मिल पाए.
बहुत सारे गहरे बादल, dark clouds have surrounded that shine within us. So our effort in these 10 days is just to take off those dark clouds one by one and move them aside, so that that ray of shine can come and bring in that radiance and within us. Now, coming to the first importance, that why it is important to get connected to the sacred feminine is this, that it is a call to balance, I say. जिंदगी में जब भी कोई भी चीज बैलेंस में चल रही होती है, तो वो आपको एक अलग किस्म का उत्साह भी देती है, आपको एक कंटेंटमेंट भी देती है, एक सुख भी देती है, एक मोटिवेशन भी देती है, एक इंस्पिरेशन भी देती है. तो वो जो एक बैलेंस है, वो आपकी जीवन का आधार बन जाए. और जब आप अपनी शक्ति के साथ चलते हैं, वट एवर क्वालिटीज आर विद इन यू, जो आपके अंदर एक इनेट क्वालिटीज हैं, जो आपकी बेसिक क्वालिटीज हैं, आप उनके मुताबिक चलते हैं, तो एक अलग किस्म का आपके पास सेटिस्फैक्शन रहता है. वो इनबैलेंस नहीं होता. नहीं तो आप जब, because as I said before also, the women folks have different kind of duties, and when you are performing those duties, idhar bhi udhar bhi, then there are a lot of things happening all around. You are not able to maintain your balance. You tend to flow with the things around. इतना क्योर से इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है कि आपका भागे बिना चलता ही नहीं, और उसमें आप अपने आप को खो देते हैं. इम्बैलेंस क्रिएट होता है. वो इम्बैलेंस आपकी ईटिंग हैबिट्स में भी जाता है, आपके लाइफस्टाइल में भी जाता है, आपके कम्युनिकेशन में भी जाता है, एंड देन इट क्रिएट्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विच आर अनवांटेड, जो किसी को भी नहीं चाहिए होती है. तो बैलेंस अचीव करने का एक ही सुंदर तरीका है कि हम अपनी जो विजडम है, इनर विजडम जो है, अपनी जो शक्तियां हैं अंदर, उनको पहचानें. जब मैं शक्ति कह रही हूँ, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स लाइक ओके समथिंग very unusual, very mysterious. Yes, it is mysterious, but it is more of your qualities, of your, I would say कि आपकी नेचर में क्या है. किसी को खाने बनाने का बहुत अच्छा शौक होता है, तो किसी को आर्ट करने का शौक होता है, किसी को पेंटिंग, आर्ट में पेंटिंग करने का होता है, तो किसी को नृत्य करने का शौक होता है. तो सबके अपने अपने शौक हैं. अगर मैं किसी नृत्य करने वाली महिला को, मैं अगर इफ आई टॉक अबाउट द डांसर एंड आई टेल देम नो, यू हैव टू सिंग, यू हैव टू पेंट, सो शी माइट डू इट फोर्सफुली, बट इट इज नॉट हर क्वालिटी. सो देयर इज अ डिफरेंस. और अगर मैं उसको बोलती हूँ कि आप इस डांस में ऐसे परफॉर्म करें, तो शी कैन डू इट ब्यूटिफुली, एंड दैट विल गिव मोर जॉय टू हर. So first is a call to balance. This really helps us to create our balance in life. Secondly, coming to what is the benefit of going and understanding the sacred feminine is awakening your inner wisdom. जो आपकी एक्सटर्नल क्वालिटीज हैं, वो तो इसको मॉडिफाई करती है, बट इट इंक्रीजेस योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूटिव पावर को, आपकी महसूस करने की शक्ति को, और आपकी एक भावनाओं को समझने की शक्ति को. जब आप उसको जानने लगते हैं, उसके तरीकों को अपनाने लगते हैं, तो बहुत अंतर आता है, और एक इट्स अ totally a different transformation journey, and you become more I would say you're able to perceive more. आपको उन भावनाओं को समझने की अलग किस्म से एक strength महसूस होती है. So I would say कि first is that it helps you to create your balance. Second, it awakens your inner wisdom, कि आपको कैसे चॉइस करना है, कैसे आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, और कैसे अगर आप अपने प्रोफेशन में हैं, तो what choices you can make, how can you balance your time, how can you balance your work-life balance. All these things come from this space. So I always say connecting with oneself, connecting with your unique self is the basic step of any kind of success you are looking in your life. Any kind of the movement you're looking in your life, whether it is building up your relationships, whether it is building up your career, whether it is building up your home, whether it is bringing up your children in a positive way.
आप कुछ भी करते हैं, अगर आप बैलेंस्ड हैं, आपका जो कप है इट इज वेल मेंटेन, वेल केप्ट, वेल डन, अच्छे से क्राफ्टेड है, तो सबको उसका रस मिलेगा. So it is like connecting to your own rasads. So we're not looking forward to कि हम इनकी क्वालिटी अच्छी है ये हम कैसे लें, बल्कि जर्नी पे हैं जहां हम जानेंगे कि हमारी क्या क्वालिटी है और हम उसको कैसे नर्चर कर सकते. So first is finding your balance, second is awakening your inner wisdom, third is navigating your relationships. Lot of things are happening because communication, I am so exhausted, I am so tired, I am so overwhelmed with the situations are not stopping, the expectations are not stopping, the communication levels have gone down to a different extreme. सारी चीजें तो एक के ऊपर चीज वैसे आ रही है कि आप you are always into a mode of not communicating with peace. और आप जो शब्द बोलते हैं दे होल्ड लॉट ऑफ पावर, क्योंकि वही आपका एक कम्युनिकेशन का तरीका है. आपने जो बोले, एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट ना, जो शब्द एक बार आपने कह दिए वो वापस नहीं लिए जा सकते. एंड इट इज अ पावरफुल एनर्जी व्हिच यू थ्रो. सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now, to maintain that communication, the first question when I speak to many women's and people around, they would always come up say, इतना सब कुछ है, इतना ओवरवेल्म है, हमको याद ही नहीं रहता कि मुझे चिल्लाना नहीं है, या मुझे थोड़ा रूडली नहीं बोलना है, या मुझे I am so unhappy with myself that I tend to speak like this. This is natural. When you are not happy from inside, when you are not contented from inside, when you are not at the core, आप बैलेंस नहीं है, तो आप जो भी चीज करेंगे वो इम्बैलेंस से आएगी. अब जब वो आप कम्युनिकेट वैसे करेंगे तो जो भी रिलेशनशिप्स में है वो डेफिनेटली आपके एक डिफरेंट काइंड, somebody will throw their expectations on you and then you would revert back to them and then you would say my expectations were this, and this will never get solved. सॉल्व हो ही नहीं सकता है. This is something which is ongoing and we cannot meet anybody's expectations. And understanding, हम इसको डिटेल में जाएंगे, हर चीज की डिटेल में जाएंगे in next 10 days and we will see कि उसको कैसे हम bring up कर सकते हैं, that we are not here only to please others. We have to please ourselves first to be able to be in a position to give something, to give that love, to share that love. First, I need to take care of my being, myself. इसको क्या चाहिए, इसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या इसकी डिजायर्स हैं, क्या इसको पढ़ने का शौक है, क्या इसको लिखने का शौक है या जानने का शौक है, उसको मैं कैसे बैलेंस करूं, अपनी विजडम को गेन करूं, ताकि मैं कम्युनिकेशन लेवल को इम्प्रूव करूं एंड देन आई कैन मेक इट नेविगेट. सो नाउ वी हैव कवर्ड 3 and then the fourth one is embracing your authentic self. Apple can always be apple, हाँ. Apple कितना भी चाहे कि मुझे मैंगो जैसा जूसी होना है, वो वैसा हो नहीं सकता. बट दिस इज द प्रॉब्लम, वी ह्यूमन माइंड, हम लोगों ने एब्सॉर्ब कर लिया है कि मुझे तो वैसा ही बनना है, एंड दैट इज टेकन टू अ डिफरेंट डायमेंशन. सारा बेसिक प्रॉब्लम वहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, दैट वी आर ट्राइंग टू बी समबडी एल्स. वी आर नॉट सेटल्ड विद इन आवरसेल्व्स. And when we are not settled within ourselves, we are trying to become, so we are trying to put different kind of layers on top of us. And those layers are not constant. Whatever, however, कितना भी आप practice कर लो, वो तो constant नहीं होंगी. If I give you कि नहीं ठीक है, something like your mother tongue, आपकी mother tongue है, तो आपको कोई कितना भी लैंग्वेज आप दूसरा आ जाए, बट द कंफर्ट, द काइंड ऑफ द कंटेंटमेंट व्हाट यू गेट स्पीकिंग योर मदर टंग, एंड देन दे से समटाइम्स इन योर इंटीमेट मोमेंट्स you always want to speak in your mother tongue. Why? Because it gives you a different kind of a satisfaction, different kind of feeling.
Similarly, when you connect with your authentic self, you embrace that authentic self, that sparks you with joy, sparks with you with the, that kind of a happiness, which gives so much of energy in you, and you feel elated. And when you feel elated, everything would come. आप अगर एज अ सेंटर ऑफ द होम अगर आप शाइनिंग है, रेडिएटिंग है, everything would be radiating outside. And if you're irritated, everything will turn into an irritation because आप communicate वैसे करेंगे. So this is why I say this connecting to our divine feminine or the sacred feminine, which has the power of nurturing, which has the power of creativity, which has the power of intuition. It is very important for us to embrace those qualities now, work on those qualities, and in very simple techniques. Not something very typical, not something is go as a very ritualistic. I would say no. The small steps taken consistently can bring in a lot of different kind of transformations. So, are you people ready to follow this with me? Yes. If you're ready to follow this, please do stay connected with me for the next 10 days. We're going through a beautiful series of unleashing your sacred feminine within me. And recently, yesterday, I got a question, why it is only for the feminine? And the answer is, it is not only for the females. Every person has the male aspect and the feminine aspect. Yes, if any males also want to discover and strengthen their power to nurture intuition and creativity, which are the feminine qualities, they're more than welcome to be the part of the series and understand how beautiful it can be to bring out that balance. So we're going to cover all those key aspects. There would be they're the topics which we have divided into, which we have divided the series into. And I would request that whenever you're sitting with it, whenever you're listening to me, you can just grab a pen and pencil. Might be if you would like to note. I'm not going to give you a very typical exercises, but yes, I can request you to experiment with something during the day's time and share your experiences. Very simple exercises, and you can just note them down in your journal so that they're at ease. You can follow them, and if you forget to, they're there with you. They're written. They don't escape your mind. So let's embark this beautiful journey. So stay tuned with me, and हम इस सुंदर सी एक यात्रा पे निकले हैं जिसमें हम अपनी शक्ति को जानेंगे, पहचानेंगे और कैसे हम उसके ग्रेस में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं और अपने आने जाने वाले आसपास वालों के लिए भी उसको ब्यूटीफुल कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं. एंजाइटी इट इज द नीड ऑफ द टाइम. बहुत ज़रूरी है इस समय. मैं कहती हूँ कि हर जने को ये जानना कि अपना पीस ऑफ माइंड कैसे बनाना है, बिकॉज mental wellness is very important. Now, it has been even told by WHO and estimated that by 2030 it could be the biggest cause of all the kind of the disorders and the other thing. Mental wellness is the major, because mental illness is growing at a very high pace. We have to do something, and सिर्फ कुछ चीज़ों को करने से नहीं होगा. Everybody has to start taking small steps from their side to do this. And we, as an Alternative Mental Wellness Association, are here with a mission to bring up the mental wellness in India. We will be starting with various series of programs dedicated to children, dedicated to women, dedicated to the complete population. How simple steps using art, mindfulness, and the concept of neuroplasticity, we can bring up the mental wellness sitting at home, at your place. So stay tuned with us. Come in every day, interact with us, and if you have any questions, you're more than welcome to share. Thank you so much for your time today, and we're almost 20 minutes. So as said, I won't take much of your time, and I'll see you tomorrow at 11. Take care.
Bye bye.